Welcome to online study of Ashadeep International School. Here standard 5th and today we are going to learn GK. Okay, so in our previous session we did explanations of chapter number 5 and today we are going to learn chapter number 6, that is remarkable rulers of India. Okay, so in earlier time in India, which ruler is famous and his remarkable work done by that. Okay, so today we will discussing about them. So here it is. Let's start. First one is that the famous Kalinga war was fought by which Maurya king? The famous Kalinga war was fought by which Maurya king? So the options are A. Bindusara, B. Ashoka, C. Brihadrath and D one is that Dhanananda. Okay, I again repeating question. The famous Kalinga war was fought by which Maurya king? Okay, so the answer is Ashoka. Okay, so here you can see a picture of King Ashoka which is Maurya king. Okay, the famous Kalinga war, जो कलिंगा वॉर हुआ था इन अर्लियर इंडिया, तो कौन से मौर्य किंग ने किया था? सो अशोका वॉज अ मौर्य किंग. ओके, सो द अशोका फेमस कलिंगा वॉर वॉज fought by which Maurya king? So answer is Ashoka. Moving ahead, second is that who was the founder of Mughal dynasty in India? Who was the founder of the Mughal dynasty in India? Okay, so the options are A. Babur, B. Akbar, C. Humayun or D. Shah Jahan. Okay, so the answer is Babur. Babur was the founder of the Mughal dynasty in India. इन अर्लियर टाइम इंडिया में मुग़ल डेस्टिनी का फाउंडर मीन्स मुग़ल डेस्टिनी की जो शुरुआत थी, सबसे पहले इंडिया में मुग़ल डेस्टिनी किसके थ्रू आई थी, किसके थ्रू उसकी शुरुआत हुई थी? मीन्स उसके फाउंडर, मुग़ल डेस्टिनी के फाउंडर कौन थे? सो द आंसर इज बाबर. ओके, हियर ऑल्सो यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ बाबर. This is a picture of Babur. So I again repeating question, who was the founder of the Mughal dynasty in India? So the answer is Babur. Okay, now moving forward, who was the famous son of Hyder Ali? Who was the famous son of Hyder Ali? Hyder Ali के famous son कौन थे? So the options are A. टीपू सुल्तान, B. सिकंदर लोदी, सी. कुली कुतुब शाह and D one is that Kurukshetra Varman. Okay, who was the famous son of Hyder Ali? Okay, you have to just think about it and give me answer. Okay, so I'll give you an answer. Answer is Tipu Sultan. Okay, here also you can see a picture of Tipu Sultan. Tipu Sultan was the famous son of Hyder Ali. Okay, Tipu Sultan was the famous son of Hyder Ali. Moving forward, who was married to Raja Gangadhar Rao, the Maharaja of Jhansi in 1842? राजा गंगाधर राव जो महाराजा थे झांसी के इन द ईयर ऑफ 1842 के ईयर में झांसी के महाराजा से जो थे राजा गंगाधर राव, उसके साथ किसने मैरिज किए थे? हु वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव द महाराजा ऑफ झांसी इन 1842. ओके, सो द ऑप्शंस आर जोधाबाई, बी. जीजाबाई, सी. रानी लक्ष्मीबाई एंड डी वन इज दैट रानी पद्मिनी. ओके, सो द आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई. ओके, रानी लक्ष्मीबाई जो थे उसने झांसी के जो महाराज थे राजा गंगाधर राव, उसके साथ 1842 में शादी की थी. और जब राजा गंगाधर राव वॉर में डिफीट होकर जब उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी झांसी को अंग्रेज़ों से बचाया था. ये पूरी स्टोरी तो सबको पता है. ओके, सो रानी लक्ष्मीबाई वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव द महाराजा ऑफ झांसी इन 1842. हियर ऑल्सो यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई.
Okay, so Rani Lakshmibai was married to Raja Gangadhar Rao, the Maharaja of Jhansi in 1842. Now moving ahead, which leader was the one of the Maratha kingdom in India? Which leader was the one of the Maratha kingdom in India? कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से लीडर है जो इंडिया के मराठा किंगडम में से वन ऑफ द है. ओके, सो द ऑप्शंस आर ए टीपू सुल्तान, बी शिवाजी, सी राजा राजा छोला एंड डी किंग नरसिंह देवा. ओके, सो द आंसर इज शिवाजी. शिवाजी was the leader one of the Maratha kingdom in India. शिवाजी थे जो मराठा के बहुत सारे किंगडम्स आए थे इंडिया में, उनमें से शिवाजी एक थे. ओके, छत्रपति शिवाजी. हियर ऑल्सो यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ छत्रपति शिवाजी. ओके, सो द आंसर इज शिवाजी. शिवाजी was one of the Maratha kingdom in India. Who did Iltutmish appoint his successor as the head of the Delhi Sultanate? Who did Iltutmish appoint his successor as the head of the Delhi Sultanate? Okay, so the options are Noor Jahan, Razia Sultana, Jodhabai or Mumtaz Mahal. Okay, so the answer is Razia Sultana. Here also you can see a picture of Razia Sultana. See, this is a picture of रज़िया सुल्ताना. ओके, जो रज़िया सुल्ताना थे वो दिल्ली सल्तनत के हेड थे, उसको उसके सक्सेसर के दिल्ली सल्तनत के हेड बनाया गया था. ओके, सो इन सारे ऑप्शनों में से राइट ऑप्शंस है रज़िया सुल्ताना. सो रज़िया सुल्ताना ने क्या किया था? रज़िया सुल्ताना डिड इल्तुमिश अपॉइंट हिज सक्सेसर एज द हेड ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ओके, नाउ मूविंग अहेड, Whose favorite horse was चेतक? कि चेतक था वो किसका फेवरेट था ये तो सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ये हर जगह पढ़ने में आता है कि एक हॉर्स था चेतक, वो कौन से किंग का सबसे फेवरेट हॉर्स था. ओके, सो द ऑप्शंस आर ए पृथ्वीराज चौहान, बी इब्राहिम लोदी, सी शेर शाह सूरी एंड डी महाराणा प्रताप. Okay, so the answer is Maharana Pratap, and you can see also see a picture of Maharana Pratap. See, and Chetak was the famous and favorite horse of Maharana Pratap. Okay, now moving ahead, who was the most powerful Chola ruler in the southern India? Who was the most powerful Chola रूलर इन साउदर्न इंडिया? कि साउदर्न इंडिया में जो मोस्ट छोला के जो रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स आए थे छोला डेस्टिनी के, उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल रूलर कौन था? सो द ऑप्शंस आर ए आदित्य छोला 1, बी राजा राजा छोला 1, सी राजेंद्र छोला 2 एंड डी विजयालय छोला 1. Okay, so the answer is Raja Raja Chola 1. Here also you can see a picture of Raja Raja Chola 1. Okay, so Raja Raja Chola 1 was the most powerful Chola ruler in southern India. So here we completed our chapter number 6, Remarkable Rulers of India. Okay, let's revise one more time this chapter, so you can learn easily and you can think about it. Okay, who was the most powerful Chola ruler in southern India? So the answer is Raja Raja Chola 1. Whose favorite horse was Chetak? So the answer is Maharana Pratap. Who did Iltutmish appoint his successor as the head of the Delhi Sultanate? So the answer is Razia Sultana. Which leader was the one of the Maratha kingdom in India? So the answer is Shivaji. Who was married to Raja Gangadhar Rao, the Maharaja of Jhansi in 1842? So the answer is Rani Lakshmibai.
Who was the famous son of Hyder Ali? So the answer is Tipu Sultan. And who was the founder of Mughal dynasty in India? Answer is Babur. The famous Kalinga war was fought by which Maurya king? So the answer is Ashoka. Okay, so here we completed our chapter number 6, Remarkable Rulers of India. Here, so you have to just learn it and you have to revise it and you have to do worksheet at your home. Okay, thank you.